ये बाय कोइंसिडेंस या आर्टवर्क नहीं है, ये दे डू दिस बाय पर्पस। व्हाट? अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आमिर बिन पे आपका स्वागत है। खुशामदीद व्यूअर्स, आज हम लोग हमारा वापस कॉन्स्पिरेसी के वीडियोस का कंटिन्यूशन करेंगे और देखेंगे कि दुनिया में क्या अजीब अजीब से चीज़ें हैं जो हमारे आगे छुपी रहती है, मगर जब वो एक्सपोज होकर आते हैं वो कॉन्स्पिरेसी बन जाती है। तो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय। बहुत सारी चीज़ों के बातें हमें इसके अंदर खुलने वाले हैं। ये बाय कोइंसिडेंस या आर्टवर्क नहीं है, ये दे डू दिस बाय पर्पस। जो लोगो मेकर और आर्टिस्ट रहता ना, वो लोग ऐसे चीज बनाते, ये कोइंसिडेंस नहीं रहता भाई, ये कोइंसिडेंस नहीं रहता, ये नंबर ऑफ स्टार्स ये कैलकुलेटेड रहता है, ये हॉर्न्स वॉन्स भाई। 9/11 के करेंसी नोट्स में आप लोग देखे होंगे वो ट्विन टावर्स वगैरह कैसा डिपिक्ट हो रहा था। ये लोग ही वो क्या करते हैं, वो इवेंट होने के बाद ये लोग ही ऐसे वीडियोस बना के अपलोड करते हैं ताकि लोगों को पता चले यार भाई इनके पास जो करेंसी है उसके अंदर इनके हिडन सबलेवल मैसेजेस है। वर्ल्ड बैंक जो है दूसरे बैंक्स को भी कंट्रोल करते, तो उनके पास भी ऐसी चीजें बनती। डा विंची ये लोग कैसा बनाते थे, आप कभी सोचे? ये लोग इमेजेस वो कैसा बनाते थे? मिरर इमेजेस बहुत करते थे। मिरर इमेजेस वगैरह क्यों बोले तो ये लोग जो है हमेशा ऑपोजिट करना। सैटानिक क्या है? एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ गुड है ना। A serious sound system in his car. Now this isn't that one, no. But you're going to see how that sound affects matter. Oh, yo. Watch the glass. Risky. And now look at the metal, the steel. Just में अंदर ये दिखा रही है लोग कि एक खाली कार के ऑडियो से उसके फ्रीक्वेंसी से खेले तो कार के जो पार्ट्स है वो लोग एकदम वाइब्रेट हो रहे और अजीब मूवमेंट आ रहे वेव्स के वैसा। अब आप लोग को समझ में आ रहा है ये लोग टेक्टोनिक प्लेट्स जो अर्थ के क्रस्ट के वो कुछ फ्रीक्वेंसी से मूव करके आर्टिफिशियल अर्थक्वेक्स कैसा ला सकते। दिस इज हाउ दे डू इट। TikTok is created by a Chinese company called ByteDance. And ByteDance is actually partnered with the CCP, like the Chinese government. In China, the TikTok algorithm promotes a very different kind of content that will inspire their young people to become hard and disciplined. What does the algorithm in the West promote? Degeneracy. In their version of TikTok, they show you science experiments you can do at home, museum exhibits, patriotism videos, and educational videos. Now, they don't ship that version of TikTok to the rest of the world. So it's almost like they recognize that technology is influencing kids' development, and they make their domestic version a spinach version of TikTok, while they ship the opium version to the rest of the world. ये बात मालूम, ये वीडियो अब देख रहा हूँ मैं, बहुत पहले से टीवी नॉलेज एंड ट्रुथ में बोल रहा हूँ मैं कि टिकटॉक जो चाइनीज ओन करता खुद के उन्हें कंट्री में अच्छे टिकटॉक को रेकमेंड करते। ये एल्गोरिथम है, मशीन है, मशीन लर्निंग से होता। आपको क्या चीज़ दिखाना, आपको क्या चीज़ नहीं दिखाना, ये लोग इनके सॉफ्टवेयर्स में अपडेटेड रखते। तो टिकटॉक उसके चाइना में जो है मोटिवेशनल वीडियोस, कैसा एक बच्चा सक्सेसफुल बनना, अच्छे साइंस एक्सपेरिमेंट्स, मतलब ब्रेन डेवलपिंग एक्टिविटीज़ के चीज़ों को रेकमेंड कर रहा है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को क्या क्रिंज वीडियोस, नॉनसेंस, बुलशिट। मतलब आप लोगों को तो मालूम होगा ना यूएसए के मशहूर जो टिकटॉक आर्टिस्ट है, क्या है, खाली नाचते नाचते मुजरा मुजरा, नाच गाना। इंडियन एडवर्टाइजमेंट्स भी देख लो, मेरे को सख्त नफरत है इंडियन एडवर्टाइजमेंट। खाली गाना नाच गाना, चिप्स का ऐड रहा हो नाचना गाना रहता है, पेंट का ऐड रहा हो नाचना गाना रहता है, एप्लीकेशन का ऐड रहा हो नाचना गाना, खाली नाचना गाना, सिर्फ इसमें रहते, इसलिए मुजरा बहुत आगे बढ़ता। If we look at the Starbucks logo, what do we see? A mermaid? But what if I say it is not a mermaid? It is a siren, to be said very clearly. A demon. In the most common understanding, siren is a half woman and half fish creature. Half woman, half fish. Demon की फोटो यूज कर रहे हैं। कई चीज़ें मेड्यूसा वगैरह के भी ये लोग जो है एक ब्रांड है, मेरे को मालूम नहीं, मेड्यूसा का फेस है उसके अंदर। डेविल्स वगैरह की ये लोग मतलब शेप शिफ्टिंग रहते ना, तो वो यूज करते रहते ज़्यादा। Whose seductive songs lure fishermen to their deaths.
It is claimed that Starbucks logo also has sinister roots. By turning the original Starbucks logo upside down, the siren's tail appears more as the horns of Baphomet. It's an evil corporation built on the purpose of deception that is helping to destroy the world. So far, this is from a company that supports Israel and their witchcraft. क्या है कि भाई कितना मैं ये वीडियो से एग्री होना नहीं होना, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक स्टारबक्स नहीं पिया हमें. There's a slime mold, and this slime mold is very, very good at navigating through mazes and challenges. Japanese are so clever at this. They designed a nutrient maze replicating Tokyo in the Japanese subway system. Put oats, which is a nutritional source, they can aggro map. The main oat was where Tokyo was. They inoculated it. Then they let the slime mold grow. And first it grew out randomly. After 28 hours, it reorganized itself in the most efficient way possible and reorganized the Japanese subway system in a more efficient manner than it's designed today. Thus, this is a demonstration of cellular intelligence. Whoa! तो जापानीज उसका जो रोड मेट्रो का स्ट्रक्चर है वो स्लाइम और बैक्टीरिया वगैरह जैसी चीज से उन्हें बनाया. सेल्यूलर कनेक्शन कैसा बनता, तो मतलब फंगस को यूज करके ये लोग अपना सबवे ट्रैक बनाए. कितनी वियर्ड चीज है ये. इतना सब करने के बाद अपने आपको बॉम्ब से नहीं बचा सके. फाइजर, इसके वैक्सीनेशन थे ना. जाइफर है? What? Shit. और मेरे व्यूअर्स में से वैक्सीनेशन कौन कौन लिए जरा कमेंट करके बोलो, जो वैक्सीनेशन लिए नहीं लिए. खैरियत से दोनों. Of NASA using numerous methods to grossly mislead the public about astronauts being on the International Space Station. During interior ISS scenes from NASA's own live feed, the use of wires, harnesses, green screens, and virtual reality have been detected to achieve the appearance of a weightless environment. Examples of this include astronauts fading in and out of the screen, green screen glitches, grabbing objects that aren't really there, pulling on invisible wires, getting tangled in their harnesses, and even astronauts appearing out of thin air. This begs the obvious question. If they're really up there, why are they using Hollywood techniques to fake the footage? Now, unfortunately, I can't show you these clips in here today, but I will be sending them to you. Outside the International Space Station, during spacewalks, air bubbles have been recorded on numerous occasions. How is it possible for air bubbles to be present in the vacuum of space? I once questioned astronaut Scott Kelly about this phenomenon. His body language and answers only created more questions. In 2013, astronaut Luca Parmitano nearly drowned during a spacewalk when his helmet filled with water. This happened again just last year. Air bubbles, helmets filling with water, and drowning. Are they in space or are they underwater? Now, what's really interesting is that they train for spacewalks in an underwater pool with a complete ISS replica. Now, surely they aren't filming these spacewalks in an underwater pool and then editing them to appear if they're in. ओ भाई, मतलब वो जो ग्रेविटी टाइप वो लोग चीज बताते हैं, मैं समझता था वो लोग क्रिएट कर रहे हो ऐसा हॉलो, मगर इन एक चीज बताया, स्विमिंग पूल के अंदर स्लो मूवमेंट रहता, पानी में ऐसा मूव होए वैसा, तो ऐसा क्यों बना मेरे को आज तक नहीं समझना. मैं तो नहीं मानता मून लैंडिंग वो लोग करे. आप लोग मानते तो मानो, नहीं मानते नहीं मानो. वो बहुत ज्यादा हिट गई थी वीडियो टीवी नॉलेज एंड ट्रुथ पे वगैरह. नासा का क्या मकसद होगा, वो लोग क्या चीज देखते रह रहे. नासा का मकसद क्या होगा अदर देन मेंटेनिंग सैटेलाइट्स वगैरह, ये सब चीज कुछ ना कुछ तो वो लोग अंदर अंदर कर रहे हैं. With the help of electron microscopes, we've discovered the blocks all the way at the top of the pyramids are different than the blocks at the bottom. You see, the blocks at the top were not actually carried, they were actually baked. 1400 years ago, the Quran knew about this mystery without the help of modern technology. Allah mentions Pharaoh's command to Haman to build a fire to bake clay to build a rise high enough to see Moses as God. But wait, it gets even more crazy and even more precise. When translating the hieroglyphics, we find that there is a man named Haman who is in charge of the stone-carrying workers. These hieroglyphics were only discovered today because of the Rosetta Stone. Nobody knew about this before. So not only did the Quran know how the pyramids were built, it even knew the person's name that was in charge of the stone-carrying workers. Subhanallah. Clear proof कुरान में रहने के बाद भी लोग नहीं मानना चाहते. This book here, it's called It's Perfectly Normal. I'll read some of this for you. It says, after a bit, a person's
it becomes moist and slippery, and the clitoris becomes hard. After a bit, a person's becomes erect, stiff, and larger. Pastor. Sometimes a bit of clear fluid that may contain a few sperm comes out of the tip of the penis and makes it wet. Can we, sir, I'm sorry. Was it something I said? If you don't want to hear it in a school board meeting, why should children be able to check it out of the school system? We have perverts, and you don't want me to read the filth because it exposes the truth. How dare you tell me to stop reading it? If you don't want to hear it, why should the children have to see it? Pastor, your time is up. Thank you. That makes भाई बच्चों की बुक में गलत बेहुदे चीजों के एक्सप्लेनेशन के साथ फोटोज भी लगाए गए। दिस इज नॉट एजुकेशन, दिस इज यही तरीकों से वो लोग जो है बच्चों के दिमागों में एलजीबीटी वगैरह की चीजें डाल रहे हैं। मैं आप लोग को बताऊंगा, मेरे पास मैसेजेस भरे हुए जो भी यूएसए कनाडा से आते ना, वो लोग मिलके बोलते भाई आप जो टीवी नॉलेज एंड ट्रुथ के वीडियोस में बता रहे ना, हम लोग के आंखों से देख रहे हैं वो चीज। यहाँ पे प्रोटेस्ट चलते, माँ बाप आके लड़ते रहते स्कूल वालों से, स्कूल वाले खामोशी में 6, 7, 8 साल के बच्चों को जो है एलजीबीटी और कुछ ऐसे वाहियात चीजें सिखाते जो कि उनके ब्रेन को वो चीज से एक्सपोज नहीं करना चाहिए। हर जना परेशान है कि अपने बच्चों को सेफगार्ड कैसा करना। अगर आप बच्चे को रोकने गए, बच्चा बोला नहीं मेरे को अपनी चीज फॉलो करना है बोल के, माँ बाप पे पलटा के केस कर सकता। A lot of companies that have stars in their logo are related to Masonic symbols. They worship like the bright sun or the bright star. If you really look at it, every logo that you see around, like Carl's Jr., the Sirius FM dog, he has a star. Oh, it's a star. Yeah, the NFL logo, there's a bunch of stars. Everything has a star in it. But also stars is just like super prominent in a lot of things. Mazda, you know what the Mazda symbol is? Yeah, it looks The like owl. a bird kind of. Yeah, it's the owl. The owl is the Illuminati. HBO, if you turn it down, it's an owl. You turn your head to the HBO side, you see an owl. Whoa, what the fuck? Nah. Alright, next one, Search of Fox. Skull, crossbones. And then Taco Bell. Damn. Search of Taco Bell. You know what that is? This one f***ed me up. Taco Bell is Masonic. What? You see the reptile eye? Yo, crazy, that's crazy. It is a reptile eye, so it goes like this. And the easiest one, Chase Bank, it represents a... इतने सारे लोगोज है जो स्टारबक्स को बोलिए। आई डोंट नो, देखो असल इन लोग की जो है ना मेन फंडिंग कंपनी देखना, आप लोग गौर करेंगे, एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ऑलमोस्ट जो सबसे मशहूर ब्रांड्स है ना पूरे दुनिया में, उन लोग में एक कंपनी कॉमन रहती है। कौन सी है? ब्लैक रॉक कंपनी। और ब्लैक रॉक कंपनी जियो कंपनी का भी इन्वेस्टर या पार्टनर बनने वाला है। वो कंपनी आई डोंट नो कौन रन करता, मगर उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लाना पड़ेगा मेरे को। The Simpsons predicted the bank this time. What do you mean the bank is out of money? Insolvent? You only have enough cash for the next 3 customers? Hey, what's just a second here. No, I don't have your money here. It's in Bill's house and Fred's house. कितनी शॉकिंग बात है देखो। पेपर मनी है ही नहीं बैंक्स में, बस ओनली डिजिट्स, खाली डिजिट से खेल रहे भाई ये लोग। आपके बैंक में इतना पैसा, ओनली प्लेइंग विद डिजिट्स। और अमेरिका में 3 मेजर बड़े बैंक्स बंद हो गए, सिम्पसन्स के वीडियो में दिखा रहे हैं। हम लोग तकरीबन कब से 2016 से बोल लेते आ रहे शायद बैंक्स डूबने वाले। डिजिटल करेंसी वो सब क्या है, इजिली आपका चोरी कर सकते बैंक से। वायरस आ गया भाई, नहीं कुछ भी थ्रेड डाल दिया उन्होंने, चोरी कर लिया, बैंक में से पैसे चोरी हो गए, खत्म, वॉर बोल देते। The Simpsons predicted the crypto price. She knows. क्रिप्टो ना कभी हम लोग इसके अंदर पैसे डालो बोले, ना कभी ये चीज़ को प्रमोट करे, और हमेशा मैं क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ था। मैं एक बहुत बड़ी वीडियो भी बनाया था टीवी नॉलेज एंड ट्रुथ पे, उसके बारे में, एक इकोनॉमिक्स मैगजीन के ऊपर कैसा इसको शोकेस करे थे लोग। Is Nestle the most evil company in the world? I'll let you decide. It's the 1970s and Nestle is making a killing selling baby formula to moms who can't breastfeed. Since moms who can't breastfeed only make up a small part of the population, Nestle bribes doctors to go on television and say, synthetic formula is healthier than breast milk. And when moms believe the lie, Nestle gives them just enough free samples to last until their own milk dries up. Now they've got moms fully reliant on their toxic mixture of cow excretions, refined sugar, and GMO oil. But Nestle doesn't stop there.
They start advertising in third world countries where moms have to mix their powdered formula with polluted drinking water, causing their babies to become deathly ill. But it gets worse. Nestle then buys up all the clean drinking water in the area and begins selling it back to the locals at a price they can just barely afford. Nestle then offers jobs to all the local children so they can work in Nestle's child labor chocolate factories, paying them just enough money so their families can afford the drinking water that Nestle deliberately sells them at a premium. इसलिए हर बेबी पाउडर के ऊपर लिखा हुआ रहता है शायद मदर्स मिल्क इज द बेस्ट फॉर योर बेबी। एक अफसोस सी चीज़ है मालूम, बेबी पाउडर्स जो मार्केट में मिलते हैं मेजॉरिटी 90% प्लस इजरायलीज या कोई जीएश ऑर्गेनाइजेशन ओन करते हैं। मालूम आप लोग को आपका बेबी फार्मूला ज़्यादा आपके बच्चों को जो है मेडिसिन आर्टिफिशियल चीज़ों पे इसलिए डिपेंडेंट नहीं रखना बोलते हैं, नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा रखना पड़ता है बोलते हैं। मगर नेस्ले का ये गेम इन्हें जो बताया एक बार रिसर्च करना पड़ता। Good evening, godless sodomites. Kneel before your god, Babylon! Making me the highest paid megalomaniacal boy king in all of Babylon! You see, if you go and visit the very home of the Oscars where they hold it each year, you can see a plaque on the wall that says the Babylonian Court. The camera shows you the stage and you see an unmistakable Tower of Babel embedded into the design. Outside of the Kodak Theater, you have the gates to Ishtar, and you have Babylonian gods put on the outside of the gate. They have the exact elephants. They have the same exact gate of Ishtar. They have the same exact Babylonian gods over the top of the gates. Like a lot of people come up here and they thank Jesus for this award. I want you to know that no one had less to do with this award than Jesus. He didn't help me a bit. So all I can say is, suck it, Jesus. This award is my God now. I'm thankful to the Oscar gods. The other names of the gentlemen are all gods as far as a category concerned. When you get this little golden statue, you become a star. In the Egyptian culture, they also had a little statue that represented the god Ptah. Shit, ये नहीं मालूम था मेरे को। Exactly वही शेप का है। ओपनिंग सेरेमनीज रहते हैं उसके अंदर वो लोग बेबीलोन के चीज को कैसा भी प्रेजेंट करते ही रहते हैं हमेशा। ये ऑस्कर्स का शॉकिंग था मेरे को। इट इज टाइम ऑस्कर्स की अपन खबर खोदने की। A huge hole had been recently discovered in the floors of the Masjid al-Aqsa. The Palestinian authorities, when investigating this underground activity, found a huge, long tunnel. Can you believe this? Isn't this suspicious and weird? So the management of the mosque contacted some officials from the police, and they found out that some Jewish organizations, in fact, the Israeli government itself, had also been involved in this. Why would they do that? Some people say that the Jews are looking for the Tabut-e-Sakina. Others say that they are trying to demolish this mosque so that they can build their Hekel of Soleimani again. Authorities have warned the Palestinian Muslims that the foundation of the mosque is getting weaker by the day. With so much underground digging and construction, the walls of the mosque can जब डायरेक्ट ऊपर से अटैक नहीं कर सकते, नीचे से खोखला कर दो, फिर कुछ भी नेचुरल कैलामिटी, आर्टिफिशियल अर्थक्वेक या कुछ भी एक डिजास्टर आया तो वो मस्जिद गिर गई, टूट गई या कुछ हो गया, तो फिर इनको इजी रहता ना वापस इनका सो कॉल्ड थर्ड टेम्पल बिल्ड करने के लिए। ये लोग बोलते हैं देखो तुम्हारी मस्जिद खुद से गिर गई। तो ये लोग मस्जिद अल-अक्सा के पीछे तो है, अंडरग्राउंड टनल्स के ऊपर भी मैं बहुत डेप्थ में वीडियो बनाया था, आमिर्स डन पे ही है, अंडरग्राउंड टनल्स ऑफ मस्जिद अल-अक्सा। इतनी प्यारी वीडियो है भाई, वो कैसा भी चेकआउट करना आप लोग, बहुत प्यारी वीडियो है। Companies can pay women less. Yes. Why don't they hire all women? Well, that's a whole nother story. Really? I understand your argument, and I understand that you're angry. I'm not angry. I can hear it in your voice. Listen not. to your voice. I'm hearing my voice and I sound pretty calm. You have now shifted the quality of your voice, and I thank you for that. Okay. And you've just given me a condescending look, and that's another reason why we need feminism. And now I'm done. And thank you so much. क्या बुलशिट बात है यार ये सो कॉल्ड फेमिनिस्ट की। If companies can pay women less, yes. Why don't they hire all women? उसको इतना दिल पे लग गई, इन्हें खाली बोला अगर औरतों को कम सैलरी देके कंपनी हायर करती है तो उसके पूरे कंपनी में एम्प्लॉइज को औरतें क्यों नहीं रख देता उन्हें पैसे बचाने के लिए। मतलब जाहिर सी बात है जो आदमी काम कर सकता है वो औरत नहीं कर सकता, ठीक है,
इन शॉर्ट एंड स्वीट टर्म्स बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। हमारे पास क्या बोलते हैं, आदमी को ब्रेड विनर बोलते हैं, औरत को होम मेकर बोलते हैं। यहाँ पे ये फेमिनिस्ट कहाँ निकले नहीं मालूम, प्रोटेस्ट पे इनके दिल पे लग गई सीधा। तो दोस्तों देखो, अभी के लिए तो इतना ही बस है। बहुत सारे अभी और कॉन्स्पिरेसी वीडियोस है, उसके अंदर तो बहुत डार्क सीक्रेट्स, बहुत अहम चीजें आते रहेंगे। ये वाला मिक्स था। नए चैनल पे प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच कराइए। एल्गोरिथम थोड़ा मेसी चल रहा, तो व्हाट्सएप में शेयर करने की जगह व्हाट्सएप का जो स्टेटस रहता है ना आप लोग का, उसके अंदर मेरे वीडियो को शेयर करिए। बहुत इजी तरीका है, शेयर बटन दबाए, व्हाट्सएप सेलेक्ट करें, उसके अंदर स्टेटस रहता ना आपका, उसके अंदर शेयर कर दीजिए। ये बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा मेरे लिए। मेरे व्यूअर्स से मैं ये उम्मीद रखता हूँ बस, क्यों बोले तो इन रिटर्न में क्या पूछ सकता हूँ आपसे, लाइक वगैरह से तो कुछ होता नहीं, शेयर से जो है चैनल ग्रो होता। तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। कमेंट करके बताइए नीचे क्या आप अगला वीडियो क्या देखना पसंद करेंगे। नए नए और कॉन्स्पिरेसी के वीडियोस लाते रहूँगा, और दूसरे वीडियोस भी मेरे चैनल पे, उन्हें भी चेकआउट करें। दुआ में याद रखिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मिलेंगे जल्द एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, अस्सलाम वालेकुम।